श्रीदामोदरस्तोत्रम् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशम् न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम् सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशम् न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम् सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष
गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्णा मारिराधदिवानिशं न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्णा मारिराधदिवानिशं न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं
वरं देवदेहीश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप
तृतीये अह्निसकृत् भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम्। सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीशमोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं। नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये अह्निसकृत् भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम्। सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीशमोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै
नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं। नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत्। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः। विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं। न्यः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः। कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप। तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा। पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम्। सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं। वरं देवदेहीश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं। कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं। नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत्। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः। विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं। न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः। कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप। तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा। पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम्। सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं। वरं देवदेहीश मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे।
नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीशमोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं न्यः स्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये अह्निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं
कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीशमोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाले सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे क्षमामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ते च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तनीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीसत्यव्रतकृतं दामोदरस्तोत्रं श्रीदामोदरार्पणमस्तु। ॐ श्रीदामोदराय नमः।